Okay, so we are revising Caro 2016. Applicability of Caro is on every company, including foreign company, but some companies are excluded from requirements of Caro that are banking company, insurance company, Section 8 company, small company, and private companies that are not subsidiary or holding of a public company, and such private companies whose paid up share capital and reserves is not more than 1 crores. Borrowings are not exceeding 1 crore at any point of time during the year, and total revenue as per schedule 3 including from revenues from discontinuing operations is not exceeding rupees 10 crores as per the financial statements. Such private companies are excluded from Caro requirements. But if any of these three are above the limits, then Caro is applicable. Uh, Caro is not applicable for consolidated financial statement. However, the branch auditors do have to comply with Caro requirements if applicable. Now we have to learn what are the matters that are to be reported under Caro. So first, learn the series as these pointers and the clauses are important. Caro 2016, first is fixed assets. First is very fixed number, so it's fixed asset. Two is inventories. Inventories जैसे कि हमारा एएस इंडेक्स में टू इन्वेंट्रीज ही है, सेम कारों में भी टू इन्वेंट्रीज। थ्री, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लोन लिया तो इट्स नाउ मोर रिस्की, बिगड़ गई ये चीजें, नो लोन्स एंड एडवांसेस। फोर इज अबाउट four is like family have a four people, directors are a family of a company और उनको हम लोन वोन देते हैं, these are the sections 185, और exceptions उसके जो होते हैं 186, 185 and 186। तो 4 is compliance with the provision of section 185 and 186। चार लोग थे, कोई और भी आ गया, बाहर वाला आ गया, तो it is public, make it public deposits। Then sixth is cost records. Six CC cost records. Seventh is statutory dues. Seventh is seventh day of the week where you do all the things that are due. Saturday, Sunday, statutory dues. Uh, eight is repayment of dues. Eight is what you ate. Pay for what you ate. So repay your dues. Nine is everything is fine. So you raised money. So money raised nine. 10, 10 इज डेन, जो हम खेलते हैं तो वी जो हम डेन देते हैं उसमें हम करते हैं धोखाधड़ी, सो 10 इज फ्रॉड। 11 इज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, एज यू रिमेंबर कि 197 में जो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन परसेंट है दैट इज 11, सो 11 इज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। 12 इज निधि कंपनी। 12th क्लास में निधि मिली थी जो हर बात एक का 20 करके बताती है, सो 12th निधि कंपनी। And 13th is my birthday, and I'm a related party because we are related as we're doing CA stuff. So related parties. 14th is 14 February, preferential treatment and allotment, like preferential allotment। 15th is नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, क्योंकि 14 फरवरी के खर्चे के बाद आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, सो 15th इज नॉन कैश, नो कैश, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। एंड देन वी हैव 16 दैट इज एनबीएफसी का 45A of RBI Act. If you have to remember C5 and I and 45I, so that might help. I don't know. Essay, you can try to remember these in order। देन हमें फिक्स एसेट्स में क्या रिपोर्ट करना है? सो फिक्स एसेट्स में सबसे पहले कंपनीज मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, फिजिकली वेरीफाई हो रहे हैं। डिस्क्रिपेंसी अगर है तो इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज नोटिस प्रॉपर्टी डील डेल्ट विद है कि नहीं। टाइटल डीज ऑफ द प्रॉपर्टीज इन द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। फर्स्ट फिक्स एसेट्स डन। इन्वेंट्रीज फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल्स पे हो रहा है। मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो प्रॉपर्टी डेल्ट विद इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तीन तिगाड़ा कान बिगाड़ा लोन्स, तो लोन्स अगर आपने लिए हैं, कोई ऐसी लोन्स अगर आपने दिए हैं whether secured unsecured to any parties that are under section 189, firms, LLP or company, तो उनके terms and condition are not prejudicial to the interest of the company। And a schedule of repayment of principal and interest is
stipulated, and repayment is regular. Where repayment is overdue for more than 90 days, reasonable steps are taken for recovery of principal and interest. 1, 2, 3 is done. 1, fixed assets. 2, inventories. 3, loans and advances. Fourth is घर के लोग, डायरेक्टर्स को लोन देना है, दैट इज 185 186. तो अगर इफ 185 and 186 का कंप्लायंस है कि नहीं, we have to see that under fourth non-compliance if any, to provide details thereof. 5 is चार लोगों के बाद कोई और आ गया है तो पब्लिक डिपॉजिट्स. तो पब्लिक डिपॉजिट्स अगर हैं तो वो उसमें हमें देखना है आरबीआई का कंप्लायंस, कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस, 73 and 76, 73 to 76 sections, and any order by court, tribunal, company law board, NCLT or Reserve Bank. ठीक है. Now sixth is cost records. कॉस्ट रिकॉर्ड में सेक्शन 148 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स जो है वो मेड एंड मेंटेन्ड है कि नहीं एज पर दैट सेक्शन. देन सेवेंथ इज स्टैट्यूटरी ड्यूज. स्टैट्यूटरी ड्यूज जो अनडिस्प्यूटेड है वो उसका रेगुलर पेमेंट हो रहा है कि नहीं, और अगर अरियर्स हैं एट द लास्ट बैलेंस शीट डेट फॉर पीरियड एक्सीडिंग 6 months तो वो इंडिकेट करने हैं. और अगर कोई डिस्प्यूटेड हमने पेमेंट नहीं की है ड्यू टू डिस्प्यूट, तो अमाउंट एंड फोरम हमें बतानी है. mere representation to the concerned department shall not be treated as dispute. mere representation is not dispute. सिर्फ डिस्प्यूटेड वाले का हमें अमाउंट इन्वॉल्व इन फोरम बतानी है. मियर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट डिस्प्यूट. अगर मियर रिप्रेजेंटेशन है, आपने पे नहीं किया है, तो वो ऊपर में आएगा अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज नॉट पेड. And if they are more than 6 months, then details need to be reported. Then we have eighth, that is default and repayment. Eight, you ate something, now you pay for your dues. So repayment of dues, you have to check if there is any default and repayment of loans, borrowing to financial institution, banks, government or debenture holders. If there is, a period and amount needs to be reported. ठीक है. Then money raised. 9 is fine, everything is fine, so you could raise money, so the money raised is used for the purpose for which it is raised, and if not, the delays and defaults and rectifications, if any, needs to be reported. 10th is fraud by the company or on the company by officers and employees during the year notice or reported. Need to be indicated amount involved and nature of fraud. Then we have 11th managerial remuneration. 11 हमने याद किया था. 11 is the maximum percentage of remuneration that is allowed normally without special resolutions and those things. तो 11 197 section के compliance and in compliance with schedule 5 है कि नहीं, and अगर आपने excess pay किया तो they ask you कि you should secure refund. तो वही हमें देखना है कि अगर amount in वो अगर excess है तो steps taken to secure the amount back. Then 12th इज निधि कंपनी. निधि हमारे 12th क्लास में मेरी एक लड़की थी जिसका नाम निधि था. वो हर बात को एग्जैचुरेट करती थी, एक का 20 करके बताती थी, एक का 20, एक का 20. सो नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो इज 1:20 एंड unencumbered term deposit 10% मेंटेन करना है एज पर निधि रूल्स. ठीक है. तो दिस नीड्स टू बी रिपोर्टेड अगर नहीं है तो. And 13th is my birthday and now I'm related party. So related parties का कंप्लायंस देखना है हमें. सेक्शन 177 188 कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं. नॉन कंप्लायंस, ऑब्वियसली इन एवरी केस नॉन कंप्लायंस नीड्स टू बी रिपोर्टेड. देन 14th इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड पार्टली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. तो इसमें कंप्लायंस है कि नहीं सेक्शन 42 का, and whether they are used for the purpose for which they are raised. If not, the amount involved in the nature of the non-compliance needs to be reported. Now, आपने 14 को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर दी, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट 14 फरवरी वाला. देन वी विल अर्न 15 बाय कि 14 को खर्चा करने के बाद यू वोंट हैव मनी. तो 15th का नॉन कैश ट्रांजैक्शंस with the directors or person connected with him. सेक्शन 192 का कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट है कि नहीं. एंड द लास्ट इज जहां पे एनबीएफसी को, लास्ट इज 16 क्लॉज 16, अगर एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं 45 IA, तो whether they are registered or not. So this is the clauses. Now some other content that is covered in the module is reasonable interval is
Reasonable interval for physical verification of inventories depends on various factors like nature of location and feasibility of conducting. However, whenever possible, hame at least once in a year we need to physically verify inventories. Then yeah, default, if there is default in repayment on dues and there is rescheduling, then it will not change the default position, so auditor still needs to report under caro uh, under clause uh, 8. Okay, then okay, the money, we have read that if money is raised, it is used for the purpose. If the money, even in case of preferential allotment or in case of clause 9 or in case of clause 14, but the money raised should be used for the purpose, but if it's not used for the purpose, it needs to be reported. So if it is temporarily utilized somewhere else pending utilization for the purpose, मुझे कुछ construction वगैरह करना है, it is actually not being utilized, so temporarily I utilize it somewhere instead of keeping it idle. So that also needs to be reported. Okay, applicability of caro on what kind of loans. Okay, so जो हमारा वो है, the initial limits, that is कि borrowings हमारा 1 crore के 1 crore या 1 crore से कम ही रहना चाहिए प्राइवेट कंपनी में, अगर वो एक्सीड करता है तो caro is applicable even to private company. In that case, what kind of loans are included? All export, cash credit, overdrafts, and non-fund based that are now being converted to fund based, bank guarantees that are invoked and in cash, letter of credit जो कि devolve हो चुके हैं, term loans में interest जो है, if interest is accrued in due, so it is considered as a part of borrowing, and if it is accrued but not due, it is not considered part of borrowing. Okay, and cash credit facilities where the balance is continuously fluctuating, then in at any point of time, if the outstanding balance of your cash credit facility with other borrowings exceeds 1 crore, then caro will be applicable. Okay, obviously aggregate of borrowings needs to be considered. Now I think we're done. Yeah, if there is any adverse remark, the basis needs to be disclosed, and if auditor is unable to express any opinion, reasons as to why is not possible to express opinion on the same. Yeah, we're done. Thanks.